Bismillahirrahmanirrahim. The Berenstain Bears Computer Trouble. ये हमारी आज की स्टोरी है. बेरेंस्टेन बेयर्स टीवी शो के कैरेक्टर हैं. इस बुक के जो ऑथर और इलस्ट्रेटर हैं उनका नाम भी है जैन एंड माइक बेरेंस्टेन. तो ये उनके लास्ट नेम से ही उन्होंने इन कैरेक्टर्स का नाम रखा है. तो वर्ड कंप्यूटर ट्रबल से लगता है कि कोई कंप्यूटर की परेशानी है. और जैसा कि हम कवर पेज पे देख रहे हैं उनके सारे बच्चे अपने अपने कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम आजकल हमारे हर घर की प्रॉब्लम है. हर शख्स अपने कंप्यूटर पे या फ़ोन के ऊपर बिज़ी होता है. और देखते हैं कि बेरेंस्टेन बेयर्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले ये पूरी पिक्चर देख लें. इनका जो घर है वो एक ट्री हाउस के अंदर है. इसकी सेटिंग इस बुक की उनका घर है बेयर का. It was Papa Bear who first brought a computer home to the Bear's family tree house. He thought it would be useful in his furniture business. It did come in handy for printing bills for his customers and doing his taxes. तो पापा बेयर का जो काम करते हैं वो फर्नीचर बनाते हैं और वो अपने बिज़नेस के लिए पहली दफ़ा कंप्यूटर घर लेके आए थे. जो घर में फ़र्स्ट कंप्यूटर आया था वो पापा बेयर अपने लिए लेके आए थे. अब यहाँ देखते हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है. उनके बच्चे दोनों बैठे हुए खेल रहे हैं. But Papa soon found that brother and sister were coming into his shop to play video games on his computer. Before long, they needed their own computers for schoolwork, email, websites, IMing and social networking followed. अब बच्चों को पहले तो वो पापा के कंप्यूटर पे खेलते थे आके, अब उनको अपने कंप्यूटर चाहिए थे जो कि उन्हें मिल गए हैं. अब देखें कि इस पिक्चर में दोनों ब्रदर और सिस्टर के पास अपने अपने कंप्यूटर हैं. और ये मामा बेयर है और उनका बेबी भी कंप्यूटर पे खेल रहा है. Mama discovered buying and selling things on eBay and wanted a computer too. Even Honey Bear began playing simple computer games on a toy computer. Now it seemed to Papa that the whole family spent most of their time in front of computers every day from early morning until late at night. तो ये है जी स्टोरी की प्रॉब्लम कि हर शख्स कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे कर रहा है. Though it was Papa who first got the computer, it was Papa who finally had enough. His business was making things out of wood. He loved wood. He loved working with his hands, but he didn't love sitting in front of a computer. One afternoon, he came in from his shop with a headache from staring at the computer too long. तो पापा एक दिन घर आते हैं तो वो कंप्यूटर के आगे ज़्यादा देर बैठने की वजह से उनके सर में दर्द हो रहा है. और यही होता है कि जब हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हमारी आईज़ और हमारा इवन ब्रेन भी थक जाता है जो कि फिर हमें हेडेक्स देता है. तो एक दिन पापा खुद बैठे हुए थे कंप्यूटर के आगे तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो गई. Hello, he called. Is anybody home? Where is everyone? He headed upstairs looking for someone to talk to. He came to sister's room. To his surprise, he found sister with her head down on her desk, crying her eyes out. तो ये जो सिस्टर बेयर है वो कंप्यूटर के आगे बैठ के रो रही हैं. Whatever is wrong, dear? asked Papa, patting her back. What on earth happened? पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है. It's my stupid paw book web page, sister sobbed. That awful Billy Griswold wrote on it that I'm a fuzzy-faced hairball. All my friends to see and now they are saying we are in love. She burst into fresh fountain of tears. Papa rolled his eyes. Computers, he thought, nothing but trouble. तो सिस्टर को
कोई बुली कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, उसके बारे में बैड कमेंट्स लिख के, और सब लोग उस पर हंस रहे हैं. Come on, he said, let's figure out how to deal with this on your paw book page. Then Papa noticed loud music coming from brother's room. He went next door and found brother playing music on his computer while looking at soccer gear on a website. तो ये ब्रदर है, वो म्यूज़िक भी सुन रहा है और साथ सॉकर गेम वॉच कर रहा है. Aren't you supposed to be doing your homework? asked Papa. Don't worry, Papa, said brother. I'm working on it in between checking out website. See, he clicked his mouse and showed Papa his homework on the screen. तो वो सारे काम ही कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है और साथ साथ म्यूज़िक भी सुन रहा है और बाकी वेब पेजेस भी देख रहा है. अब देखें इस पेज पे क्या हो रहा है. Papa rolled his eyes again as sister called him back to her room. He peeked into Honey's room across the hall. Even she was playing a game on her computer. Further down the hall, Papa could see Mama at her computer too. Then the doorbell rang. Can you get that, dear? Called Mama. I'm busy bidding on something on eBay. तो मामा जो है वो क्या करती हैं कि वो हर वक्त शॉपिंग करती हैं कंप्यूटर पे. और ये मेलमैन है. Weirdly, Papa headed downstairs. It was Herb, the mailman, with a package. Thanks, Herb, said Papa, signing for it. He noticed the package was from eBay. You know, Papa, said Herb, you have got to get this eBay thing with Mama under control. This is the 5th package this week. You're going to go broke. See you later. तो मेलमैन भी कहता है कि तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही है, तुम लोग तो ब्रोक हो जाओगे बिल्कुल. Papa rolled his eyes yet again. More computer trouble. He decided that instead of just rolling his eyes, he was going to do something about it. That evening, after dinner, Papa made an announcement. अब पापा कोई एक्शन लेने लगे हैं और देखें कि वो क्या कहते हैं. ये सब लोग बैठे हुए खाने की मेज़ पे. I believe that this family is having computer trouble, said Papa. Everyone looked at him in surprise. What sort of trouble? asked Mama. We are having trouble with email, websites, paw book, computer games, and eBay, Papa said, folding his arm. We are spending so much time on computers that we don't even have time to say hello to each other these days. Mama had been worrying about this very thing herself. She just didn't seem to be able to tear herself away from eBay. Well, she said, what are we going to do about it? It seems to me, explained Papa, that the big problem is the internet. It takes up too much time, gets us to spend too much money, and it can be dangerous. Here, look at this. He showed them the evening newspaper. Internet child safety problems, said the headline. It says here the people use the internet to get cops to do things that aren't safe. तो पापा अखबार दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग बच्चों को इंटरनेट पे बुली करते हैं या उनको इस तरह के काम करने को कहते हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ नहीं. I guess we need to have rules for the cubs about the internet, agreed Mama. And I'm going to turn the internet off except for 1 hour each day, added Papa. Only 1 hour? said the cubs. That's plenty, said Papa. If you can't get done what you need to do on the internet in 1 hour, it's not worth doing. तो पापा ने रूल सेट किया है कि 1 घंटे से ज़्यादा अब कोई भी इंटरनेट पे नहीं जाएगा और जो भी काम करने हैं वो सिर्फ उसे 1 घंटे में किए जाएं. But what will we do instead? asked brother. You can get back outside and play like you used to, said Papa. You can play ball, go skateboarding, ride your bikes,
fly kites, go fishing, go for a 5-mile hike, pick wildflowers, watch clouds, walk the dog, play with kittens, collect rocks, pretend you're Space Bear, run around in circles and get dizzy, make mud pies, catch bugs, chase each other and scream. तो पापा ने एक लंबी लिस्ट बताई उन सारी एक्टिविटीज़ की जो कि बच्चे पहले करते थे जब उनके पास कंप्यूटर नहीं था, कि अब भी वो दोबारा वो सारे काम करें जो कि वो आउटडोर कर सकते हैं. सिस्टर एंड ब्रदर गिगल्ड, इट्स साउंडेड लाइक फन. तो उनको बच्चों को भी ये आइडिया पसंद आया. After school the next day, brother and sister did get outside to play like they used to. It was so much fun that they went over to cousin Fred and Lizzie Bruns to get them to leave their computers and come outside too. They all went down to the playground for some good old-fashioned exercise on the good old-fashioned swings, seesaw, jingle gyms, slides and merry-go-round. तो नेक्स्ट डे वो दोनों बहन भाई अपने कज़न्स को लेके पार्क आते हैं और ये वो पार्क में सारी चीज़ें खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं सब. तो इसमें से ये है कि आप जब पार्क जाते हैं तो आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, तो आप फ्रेंड्स भी बनाते हैं और उनके साथ खेलना सीखते हैं. After dinner that evening, brother and sister went online for just 1 hour and were surprised to find it was plenty of time after all. Papa learned he didn't need to waste so much time online to get his business done. He was able to stay in his shop working with the word he loved. Freed from the spell of eBay, Mama got out her old quilting kit and started work on a big quilt of birds and butterflies. She got so involved that she didn't go online for even 1 hour. पापा अब अपना फर्नीचर बना रहे हैं और मामा ने भी ईबेयर को छोड़ के, शॉपिंग छोड़ के एक अपना क्विल्ट बनाना शुरू किया है. और ये जो इससे पहले ख़वातीन इसी तरह के काम करती होती थी. जब वो फारिग होती थी तो कुछ निटिंग करती थी, कुछ सोइंग करती थी, जो कि हाथ से करने के काम और क्रिएटिव काम है. अब ये सब लोग बैठे हुए हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं. मामा निटिंग कर रही हैं, बेबी खेल रहा है. When the internet hour was over, the Bear family gathered together in front of the fireplace in the living room. They sat and read for a while. Mama did some knitting and then, wonders of wonders, they began to talk. They talk about all kind of things. तो जब फैमिलीज़ इकट्ठी बैठती हैं तो फिर वो आपस में एक दूसरे से बातें भी करते हैं. They talked about what happened in the school that day, about how Billy Griswold apologized for calling sister a fuzzy-faced hairball. They talked about brother's soccer practice after school and the terrific corner kick he would bend into the goal. अब हर बंदा अपना ये बता रहा है कि उनका दिन कैसा गुजरा, उन्होंने क्या किया. Mama told them about her plans for making beautiful new quilts, and Papa told them how he would really garden into the new batch of curly maple he had in the shop. Finally, all tried out, they got ready for bed. The next evening, the Bear family decided that they didn't want to stay home sitting in front of a computer screen at all. They did wind up sitting in front of the screen that evening, but it was so much bigger one that they got to eat popcorn too. While Grizzly Gramps and Grankin took care of Honey, they all went out to the movies. तो आज नेक्स्ट इवनिंग वो मूवी देखने चले जाते हैं सब, घर भी नहीं बैठे. What it will be? asked Papa, buying the tickets. Pirates of the Berry Potter or Spider Bear? Spider Bear, they all agreed. तो ये वो मूवीज़ हैं और पापा टिकट्स खरीद रहे हैं.
एंड स्पाइडर बेयर इट वॉज। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो हमें इन बुक से पता चलता है कि अगर हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक करें तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर के आने से पहले करते थे। और इस बुक से हमें ये लेसन मिलता है कि कंप्यूटर के बगैर भी बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, जो ज़्यादा फ़न है। उसमें फैमिली टाइज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप कंप्यूटर को सिर्फ उतना यूज़ करें जितना कि ज़रूरी है और बाकी का टाइम दूसरे काम करें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।